So today we are going to discuss about the tessellation process, how this process originated and how tessellation actually changed into triangulation, and what are the different algorithms that are used for tessellating the surfaces. So Voronoi was a Russian geologist, to be very precise. He was not a engineer, he was a Russian geologist who actually came up with an idea how to basically subdivide a plane into numerous regions based on distance to point ratios between a specific subsets. So actually what he basically developed was that in a vast area, you can basically decide on number of points like these points, and using these points as the connectors, we can define a number of smaller regions based on two basic concepts, that is the distance between the points and the connection of those points with respect to their edges. So that set of points, which he basically called these as seeds, So these points were specified not with the process, but they had to be specified before the process started of distribution. So and these points are not like based on any scientific logic. These are random points which are basically going to be defined based on your understanding and based upon your own sweet will. There is no specific set of command how to determine or how to define these seed points. Now, once you define these seed points, for each and every seed point, there will be a corresponding region consisting all the points that are closer to that point as compared to the other seed point. And one other important aspect, let us consider this point and this point. So how to determine the boundary? How to determine the boundary between those two seed points? So the most simplest idea was that you join these two seed points, estimate the vertical distance or the shortest distance between those seed points, and the center of that will actually act as a boundary between those seed points. So boundary determination became very easy because you simply join those two seed points, and the distance shortest distance between those two seed points and the half of that started to act as a boundary. Now the point comes, why are we not joining these two seed points? We are not joining these two seed points because it can be very clearly understood that this distance, and if I compare this distance, so this distance is going to be larger than this distance. Hence, there was a specified distance also defined, that what will be the maximum distance, what will be the minimum distance. So all those points which are near to that individual point, so this is the point of reference that we have right now. So all those points within the specified predefined distance to this point will be taken as into consideration. So the idea actually came up with basically dividing the land into small subsets to be given to peasants and farmers. So this was the basic idea that from where all the concepts of triangulation and tessellation actually started. So the mathematical definition of Voronoi is the partitioning of a plane with points into convex polygons. Now here you have to understand one important aspect, that when Voronoi gave his definition, there was no concept of triangulation. It was basically convex polygons. So as you can see in the diagram, so none of the shapes are actually representing like a triangle. Every shape is a polygon, maybe a convex polygon,
but every shape is a polygon which has minimum 4 to 5, 6. Even this one has 6 points. This one has 6 points. This one has 4 points. This one has 5 points. So there was no concept of triangulation over here. And the basic idea was that dividing the plane into convex polygons so that each polygon contains exactly one generating point. So that was the condition, that every circum area should contain at least one seed point, and every point in a given polygon is closer to its generating point than the other point. Every point within this enclosed space, like this is the enclosed space. So every point within this enclosed space is going to be closer to this point as compared to the surrounding points which are there. So this was the basic idea of how to define a Voronoi diagram. Now, the point also comes how to define these points. So how to define these points? So because what happens is, since you are dividing it into areas, so you need vertices and you need edges. Since you are breaking the plane into small subsets or small areas, so what you need to identify is how do you define the edge? How do you define the edge and how you define the vertices? This is the vertex and this is the edge. So in order to define the vertex and edge, Voronoi gave this following assumption. Let us see the first assumption, this one. A point Q lies on the Voronoi edge. Now, what he says is, this will be an edge provided if I take a point on this line and connecting these two seed points, if I draw a circle, the largest empty circle, it should not cut another edge. First of all, it should not cut any another edge. If I draw a circle from a point, and this circle basically touches the two relative seed points for which an edge is to be defined. So we are trying to define this edge for this seed point and this seed point. So I take any point on this edge, and if I draw a circle without cutting any other edge, I can touch the edge, but I cannot cut any other edge. If that happens, then this point actually lies on the edge. So this line will basically be defined as an edge. Over here, this line. So this is how an edge is going to be defined. Then if I take a point over here and I draw a triangle. Empty triangle means there should not be any more points, seed points coming into inside this triangle than the three sides which I am trying to touch. So what I'll do is I'll mark these distances from the location, and when I plot a circle with the help of this maximum distance between these three, what I will observe is that if there is only three seed points which are being touched by this circle, no other seed point comes inside the circle, then this point will actually act as a vertex. तो सबसे पहली जो एल्गोरिदम डेवलप हुई, दैट वाज द इंक्रीमेंटल एल्गोरिदम ऑफ टेसेलेशन. दैट वाज कॉल्ड एज द इंक्रीमेंटल एल्गोरिदम ऑफ टेसेलेशन. अब इस एल्गोरिदम में बेसिकली क्या था कि ऑलरेडी आपके पास एक सरफेस है जो डिवाइडेड है. ठीक है, सबके पास अपना अपना एक सीड पॉइंट है, सबका सरफेस एरिया ऑलरेडी डिवाइडेड है.
पर अगर मैं इस मैश को और ज्यादा रिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या करूं? सो व्हाट ही डिड वाज कि he introduced a point. He introduced a new seed point. This is the new seed point. दिस इज अ न्यू सीड पॉइंट. इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो पहले 10 हिस्से में बटी थी, एक 11वां आदमी भी आ गया. अब उस 11वें आदमी को कंपनसेट करने के लिए, उस 11वें आदमी को हिस्सा देने के लिए, we had to now redistribute the whole system in such a way that all 11 people are actually satisfied. All 11 people are actually satisfied. तो अब एक नया सीड पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर दिया. जब हमने एक नया सीड पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप इज we have to identify all the seed points which are near or which are in the vicinity of that new seed point. तो अगर हम इस seed point को देखें तो इसकी vicinity में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है. क्यों हम इसको vicinity में ले रहे हैं? क्योंकि ये जो seed points हैं, ये इसके distant हैं. Distant इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि अगर हम इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मार्क करेंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा होगा. ठीक है, तो वो थ्रेशोल्ड वैल्यू हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो भी सीड पॉइंट्स उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के अंदर आएगा हम उस सीड पॉइंट को कंसीडर करेंगे. तो फिलहाल हम किन सीड पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं? हम उन सारे सीड पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं जो कि इसकी विसिनिटी में है. तो जब एल्गोरिदम बनती है तो एल्गोरिदम में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला डालेंगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला डालने के बाद आप, जैसे डी है, डी का आप एक फॉर्मूला डालेंगे और फॉर्मूला डालने के बाद आप डी की कंस्ट्रेंट डिफाइन करेंगे कि डी हैज टू बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू से पर मीटर या 1000 mm. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सबसे डिस्टेंस मेजर करेगा फॉर्मूला. जितने भी सीड पॉइंट्स हैं वो सबसे फॉर्मूला पहले डिस्टेंस मेजर करेगा और उसके बाद इस लूप में आके सबका डिस्टेंस को वो चेक करेगा कि कौन सी इस जोन के अंदर आते हैं. और जितने भी पॉइंट्स इस जोन के अंदर आते हैं, सपोज ये 6 पॉइंट्स आते हैं, तो वो इन 6 पॉइंट्स को बना देगा आपके, वी कॉल देम एज कैंडिडेट पॉइंट्स. वी कॉल इट एज अ कैंडिडेट पॉइंट. तो अब हमारे पास हमारे कैंडिडेट पॉइंट्स मिल चुके हैं. हमने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर करने के बाद हमने क्या करा, जो हमारे कैंडिडेट पॉइंट्स हैं जिनके साथ हमको अपनी एल्गोरिदम को डेवलप कराना है, हमने वो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिए. अब आइडेंटिफिकेशन के बाद जो वोरोनॉई वाला कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट इंक्रीमेंटल ने यूज किया. जो इंक्रीमेंटल एल्गोरिदम था, इंक्रीमेंटल एल्गोरिदम ने क्या करा, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना शुरू किया. तो सबसे पहले उसने क्या करा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर किया. ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करने के बाद उसके हाफ डिस्टेंस पे इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन के परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन खींची जो उस सब एरिया को डिवाइड कर दे. ठीक है, सबसे पहले हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन खींची दोनों नए सीड पॉइंट और पुराने सीड पॉइंट के बीच में. उसके बाद उसके हाफ डिस्टेंस पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जो उस सब एरिया को या उस एरिया को दो हिस्से में बांट दे. सो वंस वी हैव डन दैट, सो द फर्स्ट पॉइंट हैज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन. नाउ द algorithm actually will start to process in a sequential order. The algorithm will not work in a random order, although you can set it to work in a random order if you give the command कि आप d के incremental उसके हिसाब से जाइए. जैसे जैसे d बढ़ रहा है उस हिसाब से आप पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करिए within that threshold. That also you can do, but generally what we do is we move in a sequential order, क्योंकि सारे हमारे सीड पॉइंट्स के डेटा उसमें फीडेड होते हैं. तो जैसे ही वो उसके फर्स्ट पकड़ेगा फिर वो सेकंड पॉइंट पकड़ेगा. अब उसने सेकंड पॉइंट क्या पकड़ा, इसको पकड़ा. ये हमारा सेकंड पॉइंट था, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. अब सेकंड पॉइंट ने उसने क्या करा, उसने इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के बाद उसकी लाइन खींची और उन दोनों के हाफ पे, इस लाइन के हाफ पे
उसने एक और परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट कर दी, परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट कर दी जो सब एरिया 2 को डिवाइड कर दिया, सब एरिया 2 को जिसने डिवाइड कर दिया। अब आया थर्ड पॉइंट, सेम प्रोसेस हमने थर्ड पॉइंट में भी उसने इख्तियार किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हाफ पे उसने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो सब एरिया 3 को डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। तो इसी तरीके से ये हमारा पॉइंट, ये हमारा फोर्थ हो गया, ये हमारा फिफ्थ हो गया और ये हमारा सिक्स्थ हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे 6 कैंडिडेट पॉइंट सिलेक्ट हुए थे और सारे के सारे 6 कैंडिडेट पॉइंट यहां पर कंसिडर हो गए। अब आप आराम से यहां देख सकते हैं कि एक सब प्लॉट डेवलप हुआ है जो लाल लाइन से, वो सब प्लॉट एक सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो रहा है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जितने भी लाइंस, जितने भी एजेस और जितने भी वर्टेक्स इस नए सब एरिया में आए थे, हम उन सबको डिलीट कर देंगे। अगर हम पीछे जाते हैं तो हमें क्या क्या देख सकते हैं, एक ये एज था, एक ये एज है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है और ये सारे एजेस है। तो जितना भी पोर्शन इस सब एरिया के अंदर आ रहा है वो सबको हम डिलीट कर देंगे और जो हमने एक सीड पॉइंट इंट्रोड्यूस कराया था हम उस सीड पॉइंट को मेंटेन रखेंगे, हम उस सीड पॉइंट को बस मेंटेन रखेंगे, बाकी सबको हम उठा के डिलीट कर देंगे। तो जब हमने वो कर दिया तो हमको एक नया ट्रायंगुलेशन मिल गया, जिसको आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको एक नया पैच मिल गया, आपका सरफेस और रिफाइन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको और रिफाइन कर दूं, जैसे ये वाला पैच है, मैं इस पैच को और रिफाइन कर दूं, बहुत आसान काम है। यहां पर एक नया सीड पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दीजिए, यहां पर एक नया सीड पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जैसे ही आपने यहां पर एक नया सीड पॉइंट इंट्रोड्यूस किया, वो फिर से एल्गोरिथम वापस अपने डोमेन में चलना शुरू कर देगी, वो वापस फिर से चलना शुरू कर देगी। अगेन यू हैव टू डिफाइन डी, अगेन यू हैव टू डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर डी। ठीक है, like 500 mm, let us say this is 500 mm. Once you have defined this criteria, all the near points will be again evaluated. ठीक है, so only thing that you need to do in this algorithm is you need to introduce new seed points at different locations that you want to converge, basically that you want to convert। जो बड़े बड़े surface patches हैं, जो बड़े बड़े सरफेस पैचेस हैं, उन बड़े सरफेस पैचेस को अगर हम छोटे सरफेस पैच में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा जो टेसलेशन का प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस होल सिस्टम इज गोइंग टू वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी एल्गोरिथम में एक ही पॉइंट है, यू शुड अंडरस्टैंड where to introduce the new seed point. Now once you have created this sort of a surface, now once you have created this surface, you cannot introduce a point over here. You can introduce but you should not introduce. Now what you should think about is कि और कहां पर इस तरह का पैच है जिसको मैं कन्वर्ज करा के उसको सॉर्ट आउट कर सकता हूं। अब आते हैं डेलौने। डेलौने जो है वोरोनोई डायग्राम का ही एक, आप कह सकते हैं ड्यूअल है या एक उसका ऑपोजिट फॉर्म है। Why I am calling it as an opposite form? I don't know whether you can understand the figure on top. आपको ये फिगर समझ में आ रहा है क्या है? जो ब्लू कलर का फिगर है वो क्या है? सिर्फ ब्लू वाला देखिएगा, पिंक को मत अभी कंसिडर करिएगा। ये ब्लू है वो क्या है? जो वोरोनॉय डायग्राम, ब्लू लाइंस हैं, अगर आप ध्यान से इसको देखिए तो ये क्या है? ये है वोरोनॉय डायग्राम की एजेस, ये है वोरोनॉय डायग्राम के एजेस। और ग्रीन पॉइंट्स क्या है? सीड पॉइंट, सीड पॉइंट बेटा, वर्टेक्स ये है, दिस इज द वर्टेक्स। ठीक है, डेलौने ने क्या कहा कि जब आप वोरोनॉय डायग्राम को देखते हैं तो जो सरफेस पैचेस हैं वो सरफेस पैचेस को मैथमेटिकली हम डिफाइन कैसे करें।
जैसे एक एग्जांपल देता हूं पीछे चल के, ये वाला जो पैच है, ये जो पैच है, इस पैच को मैथमेटिकली किसी फॉर्मूले से प्रूफ दिया जा सकता है, सरफेस पैच को। ये जो सरफेस पैच है, इसको मैथमेटिकली किसी भी नोन फिगर के साथ अटैच किया जा सकता है, एक सिंगल फॉर्मूले से, क्योंकि ये इसको ब्रेकअप ही करना पड़ेगा, इसको किसी ना किसी फॉर्म में हमको ब्रेकअप ही करना पड़ेगा। शायद एक ये ट्राइंगल बना दें, एक ये ट्राइंगल बना दें, फिर शायद ये एक पॉलीहेड्रन बन जाएगा, तो इसका एक, तो हमें बेसिकली यहाँ पर अगर जस्ट, हो सकता है इसके कुछ कई और आंसर्स भी होंगे, पर इसमें 3 सरफेस पैच बन जाएंगे, और वो 3 सरफेस पैच के 3 अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे, उनको जोड़ने के बाद हमको इसका सरफेस एरिया मिलेगा। तो कई बार ऐसे सरफेस पैचेस बन जाएंगे कि जिसको एक्चुअली डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जिसको एक्चुअली डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो वॉर्नोई ने क्या कहा कि ये सरफेस पैचेस यूनिक हैं, डिलॉने ने भी कहा कि हाँ ये सरफेस पैचेस यूनिक हैं, पर ये सरफेस पैच डिफाइन करना मुश्किल है। So what Delaunay did was, he gave a geometric dual to the Voronoi tessellation. In a sense, he called those seed points as the vertex points. Rather than defining the vertex separately, he started calling the seed points as the vertex points. So what happened was, now all the near vertex points were eliminated out. Rather, all the seed points were converted as the vertices. So now, rather than introducing the seed points actually became the source of triangulation. The seed points actually became the source of triangulations. So now what he did was, very simply, he connected all those seed points together, and what he ended up having was triangles. He ended up having triangles. So this is where the concept of triangulation actually came into picture, where a surface, rather than being a polyhedron surface, started getting converted into a triangle. So every triangle, whatever form it may have, can be mathematically expressed by a formula. Secondly, the number of vertices and the number of edges also reduced. So the geometric information of each surface patch actually reduced to a very large extent. So storing the information also became simple. So this is the actual contribution of Delaunay, where he converted the Voronoi diagram. Using the same Voronoi diagram, he converted the diagram into a patch which was basically having 3 edges and 3 vertices. अब यहां पर डिलॉने ने क्या कहा कि हाउ टू डिफाइन अ पैच। अब आपने पैच तो डिफाइन कर दिया, ठीक है, पर हाउ टू डिफाइन अ पैच, देयर हैज टू बी सम सेट ऑफ कंडीशन एंड सम सेट ऑफ रूल्स where you define that this is a valid patch and this is an invalid patch. So he came up with some properties, basically 4 properties are there. So he came up with properties. The first property is that the Delaunay triangulation is a unique triangulation, unique in a sense that the complete surface patch can exactly be defined with the help of triangles.
The complete surface patch can be defined with the help of a triangle. ठीक, पहली चीज. दूसरी चीज, the extreme external edges of the triangulation will actually be conversant with the convex hull basically of the total domain or the surface patch. Total domain or the surface patch. देखो कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है कि अगर हम एक कर्व प्लॉट करें, ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है P0, ये उसका एंड पॉइंट है P3, और हमने दो और पॉइंट्स बीच में डिफाइन करे हैं P1 एंड P2. ठीक है, सो all these points will actually fall within a hull where it can be defined that this convex shape will actually satisfy all the properties of this curve. ठीक है, तो अगर इसमें क्या है, अगर मैं इस पॉइंट को खींच के यहां भी ले जाता हूं, मतलब मैं अब कर्व का शेप कुछ ऐसे बना दूंगा, स्टिल दिस पॉइंट P1 star, if I call this point now as a P1 star, I shift from P1 to P1 star, the convex hull property will not be eliminated, and the shape, local change of shape may occur, but overall the curve nature and the shape of the equation of the curve will not change. So that is the convex hull property. You will study more in depth in CAD basically, where you study the Bezier curves and surfaces. Here what it basically means is, अगर ये एक surface patch है, और इस surface patch के बहुत सारे हिस्से हमने define कर दिए, triangles हमने बना दिए, तो अगर मैं इस पे एक convex hull बनाता हूं, ठीक है, तो वो जो convex hull है, that convex hull will actually cover all the points which are coming inside, and the vertices, there will be 4 vertices such that they satisfy the boundary of the convex hull. तो कोई भी surface patch आपका indeterminate नहीं होगा, पहली चीज. इसका मतलब क्या है, अब मैं वो समझा रहा हूं. सेकंड पॉइंट का इसका बेसिकली मतलब क्या है, कोई भी सरफेस पैच इनडिटरमिनेट नहीं होगा. सारे वर्टिसेस के एक यूनिक डेस्टिनेशंस होंगे या यूनिक उसकी डेफिनेशन होगी. या यूनिक का यहां मतलब ये है कि हर एक वर्टिस, अगर हम इस वर्टिस की बात करें, डी वर्टिस की बात करते हैं, अगर हम डी वर्टिस की बात करें तो इसकी एक अपनी यूनिक लोकेशन होगी, सपोज x1 y1. ये वाला जो वर्टेक्स है इसकी एक यूनिक लोकेशन होगी x2 y2, और इस वर्टिस की अपनी एक यूनिक लोकेशन होगी x3 y3, और इसकी अपनी यूनिक होगी x4 y4. तो हर एक वर्टिस जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम एज अ वर्टिस डिफाइन कर रहे हैं, हर एक वर्टिस की अपनी खुद की एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, तो मेरा कोई भी सरफेस पैच ऐसा नहीं होगा जो कि इनडिटरमिनेट होगा. हर एक सरफेस पैच की जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, क्या, 3 वर्टिसेस और 3 एजेस, दे विल बी प्रॉपरली डिफाइंड. अब आती है तीसरी प्रॉपर्टी. तीसरी प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द सर्कमसर्कल प्रॉपर्टी. This is called as the circumcircle property. What does this property say? This property is pretty simple to understand basically. आपने एक surface patch बनाया using the points A, B and C. आपने एक patch बनाया A, B, C points लेके. अब आप क्या करिए, A, B और C को कवर करते हुए एक circumcircle ड्रॉ करिए. ठीक है, एक circumcircle ड्रॉ करिए. जब आप ये सर्कम सर्कल ड्रॉ करेंगे, व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व ओवर हियर इज कि इस सर्कम सर्कल के अंदर कोई और वर्टिस नहीं आना चाहिए. द सर्कम सर्कल शुड ओनली कंटेन और टच द 3 vertices, not more than 3 vertices. It should not contain any other vertex within the circle area. Edges are not considered over here. You can easily cut the edges. अगर आप सर्किल बनाते हैं और एज आपका कट हो रहा है, इट हार्डली मैटर्स. अगर आप वो बना रहे हो और एज कट हो रहा है, इट हार्डली मैटर्स. द ओनली थिंग दैट मैटर्स आर दी वर्टिसेस.
The only point of consideration are the vertices, and for every circle, there should not be more than 3 vertices which come within the circle. Am I clear? फॉर एवरी सर्कल. अब आप इसको हर पैच के लिए चेक करेंगे, ठीक है. आप BCD के लिए चेक करके देख सकते हैं. वहां पर भी जब आप सरफेस पैच इसको सर्कल को सर्कम सर्कल बनाएंगे, there should not be more than 3 vertices which are going to come inside the circle. So you need to draw when you develop the algorithm. So now the algorithm is going to be developed from Voronoi diagram. Initially, the introduction seed point actually becomes the vertex, and once you plot a circumcircle on the 3 nearest vertices, you have to make sure that no other vertex comes inside that circumcircle. Then the triangles that you are trying to generate, they should be as equilateral as possible, because this is the common confusion that happens when you are doing the this triangulation. What people tend to think is कि हमको सारे triangles जो है ना वो equilateral बनाने हैं. ऐसा नहीं होता है. सारे triangles equilateral हो, ये in a unique cases it might happen, but in a generic case it will never happen that all your triangles become equilateral. ठीक है. So the idea is that triangle should be as equilateral as possible. ठीक है. Like if I say, if I go for this triangle, this is almost equilateral, but if I go to this triangle is not equilateral. This is a right angle triangle, almost a right angle triangle. Similarly, this triangle is not equilateral. So don't bother or don't forcefully try to introduce new seed points to define a surface so that the triangles become equilateral. आप जरूरत से ज्यादा अगर सीड पॉइंट इंट्रोड्यूस करा देंगे तो आपके सरफेस पैचेस बढ़ जाएंगे, और सरफेस पैचेस बढ़ने का मतलब है आपके पास और इंफॉर्मेशन होगी स्टोर करने के लिए, तो आपका प्रोसेसिंग टाइम और स्टोरेज टाइम बढ़ जाएगा. द आइडिया ऑफ ट्रायंगुलेशन इज बेसिकली टू डिफाइन द सरफेस in least number of patches as possible. The idea of triangulation is basically to define that surface patch with least number of triangulation. तो equilateral बनाने के चक्कर में अगर हम और ज्यादा पॉइंट्स इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारे सरफेस पैचेस बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से हमारी इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. इस पे ये जो एम्प्टी सर्कल प्रॉपर्टी है, ये एम्प्टी सर्कल प्रॉपर्टी को समझना बहुत जरूरी है, जो मैंने तीसरी प्रॉपर्टी आपको बताई थी. ठीक है. जो तीसरी प्रॉपर्टी बताई थी जहां पर हम 3 अगर वर्टिसेस से एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करें तो वी हैव टू इंश्योर दैट नो अदर पॉइंट और वर्टिस, एग्जैक्टली वर्टिस, शुड कम विद इन द सर्कल. नाउ होता क्या है कि जब हम सर्कम सर्कल्स प्लॉट करते हैं तो कई बार अगर हम प्लॉटिंग के समय इस फिगर को रिक्रिएट कराने की कोशिश करें, सो व्हाट वी सी इज कि lot of circles are actually overlapping with each other. Like if you see this point, this area, and precisely if you see this part, to be very precise, there is lot of overlapping that is happening with respect to points. And what I can see very clearly is that this point is actually coming in lot of circles. This point is actually coming in lot of circles because it is the vertex of so many triangular patches. Like 4 to 5 triangles का ये एक single vertex बन के आ रहा है. But what I also observe is, for whatever circle I draw over here, for whatever circle I am drawing over here, I am not getting more than 3 vertices anywhere. Like if I see this point, this vertex is being touched by a lot of circles. Like this circle is touching it, this circle is also touching it, and this circle is also touching it. If it touches the point,
good enough. If it touches the point, good enough. But if it brings the point inside the circumcircle, then I need to go for retriangulation. Then I need to go for a retriangulation. Understood? अगर कोई भी point touch हो रहा है different circle से, then it is not my concern, it is not a problem for me. पर अगर वो पॉइंट बार बार दूसरे सर्कल्स के अंदर भी जा रहा है, जैसे ये इस पॉइंट को मैं इसीलिए बार बार कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि ये मैं यहां देख सकता हूं ये 3 सर्कल्स के साथ अटैच हो रहा है. अगर ये किसी 3 सर्कल के अंदर चला जाए, ठीक है, अगर ये किसी भी 3 सर्कल के अंदर चला जाएगा, यानी सपोज एक पॉइंट ऐसे है, इस सर्कल को तो वो टच कर रहा है और इस सर्कल के वो अंदर चला जा रहा है, ठीक है, इस सर्कल के वो अंदर चला जा रहा है, then this point is a problem for me. I need to create another seed point over here which will actually break this circle into more sections. तो जो empty circle property है, ये empty circle property Delaunay triangulation का एक तरह से आप मान लीजिए हार्ट है. एक तरह से ये इस पूरे Delaunay triangulation का हार्ट है. और valid triangulation के लिए we already have understood that the vertex should not be more than 3 in a circumcircle. The vertex should not be more than 3 in a circumcircle. So suppose if vertex becomes more than 3, then we have to go for the refinement of Delaunay triangulation, and that I'll discuss in the tomorrow's class.